Hello, everyone. I hope I am audible and visible. I think yes, I'm properly audible and visible. Okay, so today's issue was this. Yes, the Hindu का international edition नहीं आया. Yes, then I went through Mumbai edition जो available था. And Mumbai edition को देखने के बाद I thought कि अगर मुझे advertisement ही पढ़ाना है, right? तो why not I should teach advertisement in the college in my year, right? I तो in no, no. The problem is we don't have hello CBSC for here. We don't have the Hindu International Edition today. I thought I should go for Indian Express, but then I thought कि जो मैंने रात भर में करंट अफेयर्स जुगाड़ किए हुए हैं, थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह, तो वो भी कर लेते हैं। मैंने बोला ना कि द मुंबई एडिशन इज देयर, बट मैंने कहा कि मुंबई एडिशन में इतने एड्स हैं कि अगर मैं पढ़ाने पे आऊंगा तो एडवर्टीजमेंट ही पढ़ाता रह जाऊंगा। तो मैंने मेजर न्यूज़ जो है उनको कंपाइल कर लिया है एंड जो ज़रूरी चीज़ें उस पे बात करेंगे। सो सबसे पहले एक रिकैप ले लेते हैं कल का पूरा। जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उसमें यू कैन फाइंड सम पर्टिकुलर थिंग जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड है। यस, द थिंग इज इट्स ऑफिशियल नाउ दैट तेहरान है ना, दैट इज ईरान्स कैपिटल और ईरान has granted passage through Strait of Hormuz to selected group of friendly nations. Right? It's a very good news. India, China, Russia. So, Iran, they said ki if any particular ship, so this is official now, है ना? So for now, whatever that particular media thing was going on कि ईरान से इंडिया का जहाज निकल रहा है सिर्फ बाकी नहीं सर that was bullshit before that. For now this is official that Tehran has granted a passage through Strait of Hormuz for those countries which it considered a friendly nation, which included India, Russia, China. Right. This comes as the waterway remains closed, effectively closed to the most international shipping due to ongoing tensions. So for now, there are two kind of thing, and two kind of particular perception that is going on. So Iran is considering some of the particular countries as friendly, right? And other countries जो हैं वो particular वो countries हैं they either are having their personal interests associated with America or they are supporting America in this particular war. Yes, definitely. I mean, I'm not saying कि they are not supposed to be there. Pakistan, वो particular country थी one of the earliest country when the supreme leader of Iran, Ayatollah Ali Khomeini died. तो उनके लिए सबसे पहले जिन्होंने प्रेयर और कंडम किया था इस पर्टिकुलर एक्शन को वो पाकिस्तान था। तो डेफिनेटली पाकिस्तान को पैसेज मिलना चाहिए और ईरान शुड हैव अलाउड इट, राइट? ट्विस्ट भी लेंगे यार दोस्तों, मैं क्या बताऊं। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर न्यूज जो है ये पहली न्यूज है, इट्स अ गुड न्यूज, राइट? सेकंड वन इज Israel has confirmed that the like Commodore Ali Reza Tanzgiri, right, the head of Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC Navy, ये जो है इनका असैसिनेशन जो है इसराइल ने किया है ना। आईआरजीसी की जो नेवल कमांड थी, राइट, which was actually holding the stronghold on the Kharg Island. It was the navy that was had a proper command over the Strait of Hormuz. तो ये अब blockade चल रहा है, strategic blockade चल रहा है, choke चल रहा है. That is because of this particular navy. तो जो अली रेजा तंजीरी थे, he was the head, he was the commodore of that particular navy. So Israel has claimed, Israel has confirmed. भी ईरान की तरफ से कोई confirmation नहीं आया. Hi वंश, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर ईरान्स कंफर्मेशन, बट इसराइल की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है कि उन्होंने इनको असैसिनेट कर दिया है, अनदर लेवल ऑफ असैसिनेशन। माय प्रॉब्लम इज इफ यू कीप एलिमिनेटिंग ऑल द लीडर्स फ्रॉम द ईरान, पीस टॉक किससे करोगे? खैर, diplomatic standoff continue है। US President Donald Trump asserted that Iran is afraid to acknowledge the back-channel peace talk, while Tehran official rejected the latest US proposal, claiming the terms do not reflect the reality. So yesterday we discussed about it that USA has presented 15-point agenda to end the war.
राइट, एंड ईरान स्ट्रिक्टली सेड कि इस पेपर को लेके जाओ बाहर रखो, राइट, बाहर पोहे खाओ इस पे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट. While Iran has proposed its own 5 point agenda for the peace talk and ceasefire, in which he said कि we are not going to have any temporary ceasefire, it is supposed to be a permanent one, right? Yes. एंड तब तक ईरान अटैक करता रहेगा. तो ईरान ने इसराइल पे भी किए अटैक, यस वेरी करेक्ट. उन्होंने कुवैत पे भी किए हैं, उन्होंने यूएई पे भी किए हैं, उन्होंने कतार पे भी किए हैं, उन्होंने सऊदी के भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वहां पे भी अटैक किए हुए. सो दैट इज कंटिन्यूस, दैट इज कंटिन्यू गोइंग ऑन. और यही बात हो रही है कि 2 people killed in Abu Dhabi by the intercepted missile debris as the conflict still over the neighboring countries of the Gulf state. Getting ओके. तो ये पर्टिकुलर जो है वो इंटरनेशनल न्यूज में जो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट था उस पे, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, बट अदर जो पर्टिकुलर न्यूज है उस पे बात करें तो सबसे पहले G7 मिनिस्ट्रियल मीट, फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीट. सो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, राइट, ही वेंट टू फ्रांस द G7 एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग. Right, they discuss about the discussion is focused on the Western Asian crisis and a coordinated international effort to reopen the shipping lanes. यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज ये भी हुई है कि yesterday we got some particular statement from him which was not at all a welcoming language from our reputed foreign minister. उन्होंने पाकिस्तान को दलाल बना दिया, राइट, दैट इज समथिंग जो बिल्कुल सही नहीं है. तो G7 की फॉरेन मिनिस्टर समिट हो रही है, एंड देयर आर फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज देयर, एंड ही डिस्कस्ड अबाउट द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ वी कैन गेट द शिपिंग लेन ओपन. सेकेंड वन इज WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 40th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो कंटिन्यू हो रही है. कहाँ पे? कैमरून में, यूएनडे में. Focus is completely on the global trade reforms and market access and shifting the world orders. राइट. यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? डायरेक्टली ही आते हैं. सी एवरी पर्टिकुलर योर एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव टाइप. सो वेन एवर देर इज एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट विच कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट कैन बी पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है. ऑब्जेक्टिव पॉइंट कैन कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, right? So World Trade Organization में भी है, and from expert side everything major discussion is going to be on the this kind of problem जो Western Asia face कर रहा है. जो बालेन शाह है इज शेड्यूल्ड टू सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल टुडे. आज जो है वो बालेन शाह जो है, बालेंद्र शाह बालेन, राइट, द न्यू प्राइम मिनिस्टर और द फॉर्मर एबट एंड पॉलिटिशियन ऑफ नेपाल इज गोइंग टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. लेट्स होप फॉर द बेस्ट that he and Indian prime minister they should have a good bonding, and we should have our neighbors close. Apart from this, other global headlines में बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे है, राइट. तो द it started with a tragic incident जहाँ पे 24 लोग जो हैं वो plunged into the river after the tragic bus accident, right? ये हुआ है. UN chief Simon Still has publicly applauded India's new revised climate plan to reinforce its commitment to the Paris Agreement goal. यहाँ गैस पेट्रोल नहीं मिल रहा लोगों को, और ये आदमी हमारे क्लाइमेट प्लान को लेके अपलोड कर रहा है. खैर, उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ चीजें की हैं. विल डिस्कस अबाउट इट जब हम नेशनल न्यूज करेंगे. तो फीफा भैया वर्ल्ड कप, फीफा जो फेस्टिवल है वो शुरू हो चुका है. Fun round of tickets for the upcoming tournament has officially gone on sale. Global rush from the football fan. So मैं तो भाई बहुत excited हूँ. Though I'm not going to watch any match on stadium. I'll watch it on the TV. So I'm तो waiting for it. Now let's get into the national news. And national news is very important today. सबसे पहले इस वाली पर्टिकुलर चीजों की अपन बात करेंगे, है ना? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, Prime Minister Modi on the West Asian conflict. So Prime Minister Modi is scheduled to hold a video conference with the Chief Minister of all states and union territories. The meeting focused on the reviewing the India's preparedness regarding the energy security, fuel stock, and the safety of Indian nationals in the Middle East. मैं मजे की बात बताता हूँ, right? Look at this one. Okay, this is official now, है ना? Amid lockdown rumors and fuel shortage fear, the government of India confirmed, right, that 60 days of oil stock and enough LPG stock for a month is there for the India. So जो fuel है technically, जो oil stock है जिसमें पेट्रोल एंड डीजल आते हैं,
So we have a 60 days of oil, and when it comes to LPG, we have a month of LPG. The good news is the Strait of Hormuz से अब हमारे ships pass हो पाएंगे. So the best part is कि वहां से जब पास होंगे तो हमारे पास अब जो है वो थोड़ा सा उस फ्यूल क्राइसिस का और हम इस like when we don't have fuel crisis that means the market won't go down, the inflation won't come. तो ये एक पर्टिकुलर अच्छी चीज है. हालांकि जो नयारा एनर्जी है उन्होंने पेट्रोल के प्राइस 5 रुपए से एंड डीजल के प्राइस 3 रुपए से बढ़ा दिए ड्यू टू ग्लोबल ऑयल सर्जेस. राइट. आपदा में अवसर मित्रों. ठीक है. सो द बेस्ट पार्ट इज कि यस अनडाउटली द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग मीटिंग फॉर द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट, बट ही इज ऑल्सो मेंशनिंग कि हमारे पास जो फ्यूल शॉर्टेज है, राइट, जिसको जो अलग अलग जगहों पे दिख रही है, दैट इज समथिंग जो ऐसी नहीं है. दे क्लियरली ऑफिशियली मेंशन दैट वी हैव ऑयल सप्लाई फॉर 60 days and LPG supply for 30 days. Right, today Russia is making around 7,000 crore, doesn't it? Misaligning with the earlier sanction with the EU. Daksh, that is something जो आज से नहीं चल रहा, वो almost 15 दिन से चल रहा है. So what exactly happened? The Americans ने रशिया से Russian oil पे जो secondary sanctions थे वो हटा दिए थे. So technically Russia was actually earning 150 to 200 million dollars of a profit every day. राइट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल सेल वो कितना कर रहा है. टोटल सेल तो 7,000 to 9,000 crores है, बट इट इज एक्चुअली अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 150 to 200 million dollars. तो रीजन वाज क्वाइट सिंपल. इफ द गैस सप्लाई टू द यूरोपियन यूनियन इट विल स्टॉप, तो यूरोपियन यूनियन जो है उसकी बैंड बच जानी है. जी हाँ मित्रों, वहां पे गैस सप्लाई जो है नॉट ओनली फॉर द कुकिंग इज देयर, क्योंकि वहां पे लिविंग के लिए, वहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से रेगुलर गैस सप्लाई चाहिए होती है, फ्यूल सप्लाई चाहिए होती है. तो अगर वो नहीं होता है तो यू की बैंड बच जाएगी. सो सेकेंडरी सैंक्शन तो उसने पहले ही हटा दिए थे. तो ये तो अपन ने आई गेस 10-15 दिन पहले डिस्कस किया था कि 150 to 200 million डॉलर जो है वो डेली का प्रॉफिट कमा रहा है वो. राइट. इट्स नॉट जस्ट लाइक कि एंटायर मंथ में ना, डेली का प्रॉफिट कमा रहा है. ठीक है. So that was the biggest and positive national news. Election Commission of India has reported seizing illicit inductment worth of 408 crores across the four state and one union territory ahead of 2026 election. So election के पहले 408 करोड़ के जो पर्टिकुलर illicit inductments हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीज किए हैं. ठीक है. India has appointed the Parisamy Kumaran as the new High Commissioner to the United Kingdom. ये एक नई न्यूज़ है. And Supreme Court issued a warning against the use of non-existing AI generated judgments in the legal proceeding. So भैया अब जो है AI वो जजमेंट भी बना के दे रही है. AI मतलब क्या ही बोलो. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि दैट इज समथिंग जो कि गलत होगा. उसके अलावा जो है वो रेगुलर वाला ही है. मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यू चल ही रहा है. देयर इज अ गन फाइट ब्रोक आउट बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड मिलिटेंट इन मणिपुर, द विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट. राइट. इंडस वाटर ट्रीटी जो है, India has maintained a stance that the treaty will remain in abeyance until the Pakistan ends its support to the cross-border terrorism. So remember last year when Pahalgam attack happened, so Indus Water Treaty जो थी उसको इंडिया ने क्या कर दिया था, होल्ड कर दिया था. राइट. एंड वाटर सप्लाई एंड वाटर जो एक्सचेंज होता है, जो वाटर क्या कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको भी होल्ड करके रखा है. दो वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ इंफ्रा कि हम पूरा वाटर वो कर सकें, बट द डिजायर्ड वाटर टू पाकिस्तान जो है वो नहीं जा रहा. नाउ द समर्स आर कमिंग, है ना. और जब समर्स आते हैं तो पानी की जरूरत होती है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी. तो पाकिस्तान थोड़ा सा झटपटा रहा है, बट इंडिया ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि द ट्रीटी विल रिमेन इन अबेयंस until Pakistan ends its support to the cross-border terrorism. Right? उन्होंने सिंपल सा कह दिया है. फिर an Indian national was among the two people killed in UAE following debris intercepted in missile on the March 26. These were the important national news जो हमें देखने को मिली है. Now let's come to the most important topic जिसको हम लगभग रोज डिस्कस कर रहे हैं. That is Western Asian conflict. So 28th of February से 27th of March हो चुकी है. So we have entered almost what we can say 28 डे कंप्लीट हो चुके हैं. 29th डे में हम एंटर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वॉर में. सो व्हाट आर द मिलिट्री डेवलपमेंट? ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने
82nd रिटेलिएटरी ऑपरेशन लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल इसराइल के हाइफा पोर्ट में targeting strategic sites respond to the US Israeli attacks. So उन्होंने 82nd wave of retaliatory operation किया है कि like for now conflict में सबसे ज्यादा परेशान जो देश है वो है लेबनान. So न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट हो, राइटर्स हो, अल जजीरा हो, द गार्डियन हो, all of them are saying that there is a massacre, there is a genocide kind of thing going on in Lebanon. सो इसराइल ने बहुत ऑफेंसिव स्ट्राइक्स लॉन्च की हुई हैं, राइट, दैट इज नेबते एंड बिनती जबीली एरिया में, जहां पे काफी ज्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिल रही हैं. द रिपोर्टेड कैजुअलिटीज क्रॉस द 1100 मार्क इन लेबनान, जबकि लेबनान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था भी नहीं, राइट. एंड दे आल्सो मेंशन्ड अबाउट अप्रॉक्सीमेट 140,000 पीपल जो डिस्प्लेस हुए हैं. सो लेबनान इज बिकमिंग अनदर ग्राउंड जीरो लाइक गाजा, जहाँ पे अननेसेसरी रिटेलिएशन, अननेसेसरी अटैक्स जो है वो हो रहे हैं. यूएई की कैजुअलिटीज की हम बात कर चुके थे कि अबू धाबी में क्या हुआ था. नाउ लेट्स डिस्कस द डिप्लोमेटिक्स, क्या वो चल रहा है, अपडेट्स क्या चल रहे हैं. President Trump has extended his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz to 6 April 2026. Remember, if the Iran is not opening the Strait of Hormuz on Friday, then we are going to retaliate very bad and we are going to obliterate ye wo aisa waisa. So it has extended the Iran's deadline for the 6th of April 2026. Right? Yes. He stated that talks are going very well and temporary pause planned strike on Iran energy is for next 10 days. So अब सीन क्या है मैं वो बता देता हूँ. यूएस की तरफ से आई एम नॉट श्योर. डोनाल्ड ट्रम्प रोज एक अभी रिसेंटली आई सॉ अ वीडियो फ्रॉम वन ऑफ द कॉमेडियन श्याम रंगीला. उसने बोला डोनाल्ड ट्रम्प इज थ्रेटनिंग ईरान लाइक ही इज टेकिंग मेडिसिन. After breakfast, one threat, right? After lunch, another particular statement. After dinner, another particular statement. और ये हो रहा है. दिन भर में ही ये जो ट्रम्प है उसके स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं. तो दैट इज समथिंग जो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक चल रहा है. What we are getting is simple. US is claiming that the talks are going on with the back channels. The things are getting better. But Iran is strictly refusing about any back channels. उन्होंने ये बोला कि yes, there are certain proposals from the friendly nations of Iran, right, to stop the war. We are thinking on it. जो पाकिस्तान का स्टैंड था कल जो हमने डिस्कस किया था, that Pakistan is helping on the discussion. So that is something जो अभी क्वेश्चन में आ गया. I mean, American officials have started reaching to Islamabad, but the Iranians are not at all, what you can say, entertaining that particular thing. Right. Iran has strictly, in the Strait of Hormuz, Iran has implemented a strict toll booth system for the vessel in strait, severely disrupting the global oil transport. Only 150 ship passed in March, driving oil price toward the record high. The same America, which in movie shows an almighty and marine then can shift an entire regime. हाँ, तो तुम मूवी से हिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या? राइट. इफ यू नो द अमेरिकन हिस्ट्री, दक्ष, मैं तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ. 1945 जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो दैट 1945 आल्सो वाज अ वॉर जिसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा वो किया था. हाँ, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, टैंक्स वगैरह, पैटर्न टैंक्स एंड अदर थिंग, दे वर द वन व्हिच एक्चुअली एडवांस देम. बट दिस वाज द लास्ट वॉर अमेरिका वॉन ऑन द ग्राउंड और एनी काइंड ऑफ थिंग. लाइक फिर उसके बाद वियतनाम आया, नॉर्थ कोरियन पेनिनसुला वॉर आया सबसे पहले, दे लॉस्ट इट. देन कम्स द वियतनाम, दे लॉस्ट इट. वियतनाम में तो ये कहते हैं कि अमेरिका जीते नहीं, दे डिक्लेयर्ड देयर विक्ट्री एंड दे रैन अवे. एंड ये सेम पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैंने उसमें पढ़ा, क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी कल, लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स की आर्टिकल में, द एक्सपर्ट्स आर सेइंग यू शुड डिक्लेयर विक्ट्री एंड रन अवे. So Vietnam was there. Vietnam में भी यही हुआ. फिर they decided to go on the Gulf, right? So whether that is Iraq, whether that is Libya, whether that is other countries, वहाँ भी यही बवाल हुआ. Then they went for Afghanistan, right? You know what happened in Afghanistan. This is not a very long time ago. 2021 में क्या हुआ तुम्हें भी पता है. Then it was Iraq.
right? So they didn't like they never won a single war on the ground after 1945. So that almighty, right, is just a kind of particular perception जो फिल्मों में ही देखने को मिलता है. All they are doing is espionage, right? They are funding the proxies. इन सबको जो बनाने वाला काम है मतलब फॉर एग्जांपल अलकायदा हो तालिबान हो और मॉडर्न डे हमास हो आई मीन हमास को तो पैसे दिए थे पीएलओ को काउंटर करने के लिए इसराइल और यूएस ने so Mossad, CIA, this is a written document, this is a well-written news. कि CIA and Mossad, they have paid Hamas, right, to stay over there, to keep existing because they wanted to end the Palestinian authorities in Gaza. So Americans only do espionage, they only do some strict secret operations, but they are not a very war friendly. क्या कहना चाहिए वॉर के लिए तो नहीं बने हो. सेकेंड थिंग ये ओसामा को ढूंढने गए थे राइट इन 2001 they entered Afghanistan. They had kind of a very good strategic information base in Pakistan, but it took them 11 12 years to understand कि जो ओसामा है वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है. क्या बोल सकते हैं आई मीन सीरिया यू काइंड ऑफ लॉस्ट राइट जो particular वो है क्या कहते हैं इराक they kind of lost because it's not about winning a country or displacing the regime, it's about what kind of loss you have faced. So Afghanistan or Syria or any place so they have faced a huge amount of loss and that is correct. So Americans ने 45 के बाद कोई war on ground जीता नहीं है. So if they are planning the way the news are coming, right, the way things are coming, ये जो particular plan है कि भैया ground invasion करेंगे, there are chances कि खार आइलैंड को for sometimes they can hold it, but मुझे नहीं लगता कि ईरान के अंदर जाके और वो अटैक करके they are going to win the war, right? So ये problem है, वो सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है दक्ष. हाँ, that is very correct. मतलब they help ask from they should ask help from Avengers. अभी Avengers को छोड़ो, they asked help from China. I mean, China to enemy number one है ना for America now. So they asked Chinese primer कि भाई आप हमारे लिए नेवी भेजो. And China was like कि चल भाई निकल. Right? So that is what is happening. So जो oil choke point है Strait of Hormuz का तो वो तो continue है. What is Rand is saying? Sorry to interrupt, but I generally wanted to know if 12 minutes to clear post videos NLAT, NMIMS LAT. We are planning, right? We are soon going to get those videos as well. So don't worry. We are going to get it soon. Getting? Okay. चलो move on to the next one कि आगे क्या हुआ. So Strait of Hormuz के कारण जो prices हैं वो तो high हैं ही. And जो G7 and global mediation है उसकी भी बात हो ही रही है. Right. The thing is, France is hosting G7 foreign ministerial meeting in efforts to Strait of Hormuz open, but nahi. Meanwhile, Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif is leading a diplomatic push to end the war. Right. But वो कहीं ना कहीं इतना वो नहीं हो रहा. I told you ना, I got reports that American officials are in Islamabad, but Iran was like, "Yeah, देखते हैं क्या करना है." Now, एक और न्यूज है जो तुमने अगर फॉलो की हो तो मैंने कल भी बोला था कि ट्रम्प एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन द इनसाइडर ट्रेडिंग राइट. Yes, in the Monday before the market opens, the Trump says ki we are having 5 days of a kind of ceasefire. We are not going to attack on it. So market opens and it boom, right? Then oil price goes down, and they made approximate a billion. मार्केट से पहले 2 ट्रिलियन गायब हुए फिर 3 ट्रिलियन आए सो ओवरऑल नहीं 1 ट्रिलियन रिकवर हुआ सो ओवरऑल देयर वाज अ 3 ट्रिलियन चेंजेस इन द मार्केट इन डाउ जोन्स. So people have now started accusing him as an insider trading, and this is something because of which he can actually be impeached. So let's hope for the best कि क्या सिनेरियो निकल के आता है बट ये चीज हो रही है राइट. Now, talking about the impact on India, domestic preparedness, yes, Modi ji is meeting with the state chief minister. Modi ji is doing good. Our government is trying hard to maintain all the strategic, what we can say, stance जो हमारा होना चाहिए. Yeah, right.
स्ट्रिक्टली मैं कल भी शाम को जब मैं निकला आफ्टर द ऑफिस वर्क, then I realized कि 50% जो पेट्रोल पंप है, they are giving you fuel and approximate 50% are there जो कि फ्यूल नहीं दे रहे हैं। द रीजन इज सिंपल, हो सकता है कि फ्यूल की शॉर्टेज हो, दैट्स व्हाई दिस इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन दे आर डूइंग। बट एक और रीजन मैंने बोला था कि जो डिपो होता है, फ्यूल डिपो, वहां से फ्यूल जब पेट्रोल पंप तक पहुंचता है तो टेक सम टाइम। तो हो सकता है कि उन्होंने उस प्रोसेस को स्लो कर दिया हो जिससे कुछ पेट्रोल पंप जो है वो बंद हुए, राइट? बट फॉर नाउ मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया इज हैविंग सीवियर फ्यूल क्राइसिस। बट जो मोदी जी ने वहां पे जाके बोला था, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में, कि हमने कोविड जैसी सिचुएशन में भी साथ आके किया है, ये एक्चुअली दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर एक्चुअली पैनिकिंग। I mean, they have seen this, that during COVID-19, 90% work were done by the people and 10% was done by the frontline workers. I didn't like मुझे कभी ऐसा नहीं लगा the government, the leaders are actively helping people. There is one statement from Professor Manoj Jha, the Rajya Sabha member, right? He said कि साहब मेरे ट्विटर में there were regular requests for the oxygen cylinder, remdesivir medicines, injection, but I was not able to help them. So if our leader, a member of parliament, was this kind of helpless, then what kind of helplessness our people like felt during that time? So वो कोविड का नाम लेके मोदी जी ने शायद थोड़ा सा गलती कर दिया। I don't think there is going to be a COVID-like situation. If even there are going to be few lockdown, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम और बाकी सारी चीजों से we can get out of it. Touch wood, there is no pandemic kind of situation. So, majority of chances are there. We are not going to lose any loved one during this particular crisis. Good news are coming. मैंने तुम्हें बोला भी कि ईरान ने हमारे शिप्स के लिए, इंडियन शिप्स के लिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें थम्स अप दे दिया है। So that is one particular thing जो हमारे लिए अच्छा है। So it will take some time. कुछ 7-8 दिन लगते हैं to come to the homeland from Gulf region. So from there, there is going to be a regular supply. Let's hope for the best. So even if you don't have fuel now, if you are seeing the huge crowd in the petrol pump, don't get panic from it. Things are getting better, and even if there is a shortage of fuel, पेट्रोल डीजल नहीं है अगर, एंड इफ यू आर हैविंग इंडक्शन एंड एलपीजी, मुझे लगता है खाने से बेहतर कुछ नहीं है। एंड कम से कम हम कोविड जैसे अपने लव्ड वन को तो जाते हुए नहीं देखेंगे। सो yes, government of India is trying hard for the domestic preparedness because they know economic losses are going to be high. Energy and trade की अगर बात करें, the government maintain the fuel supplies like maintains the fuel supplies are stable for next 2 months, right? Despite concern over the Strait of Hormuz, economists warn that sustained oil price at $100 per barrel could moderate India's financial year 27 से GDP growth by 6.6%. तो जो हमने 7+% का टारगेट लिया था, अगर ये $100 per barrel बना रहा for the longer period of time, then it will reduce to 6.6%. Right? That is the thing. Next one जो है वो flight operation. Air India has updated its scheduled for 22 international flight, primarily to destination to the Gulf like Jeddah, Riyadh, while maintaining the regular schedule to the US and the Europe. अब स्टोरी क्या है मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि क्या कहानी जो है वो कही गई है। सो देयर वाज अ पर्टिकुलर एडिटोरियल जिसमें बात की गई है कि इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स में, राइट, किस किस तरीके के इम्पैक्ट्स आएंगे, या किस तरीके के इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो भाई साहब, जो एनर्जी सेक्टर है वो तो तुम्हें पता ही है कि दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड वेरी सून। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी affected because the urea, the fertilizers, राइट, ये सारी चीजें जो हैं वो रेगुलरली our Gulf nation से आते हैं and we use LNG to make those fertilizer. The agriculture sector may be damaged, right? And then we got the other particular industrial aspect. For example, ceramic industry that is going to be affected. For example, the what we can say polymer industry. Now, polymer industry is something just maybe you can count the polythene, the plastic, the things that are made up of plastics, right? And all other particular thing, they are also going to be affected. Then comes the next point कि भैया जो regular transport है that is going to be costly if the prices
continuously rising, then everything which locals actually consume, whether that is fruits and vegetables or a regular grocery household thing, they all are going to uh, be costly. So overall fashion में अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस चला तो देश में एक अच्छा इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिलेगा, which is not right. But the good news is कि भैया कमिंग जो पर्टिकुलर वीक्स हैं दे आर लुकिंग पॉजिटिव फॉर इंडिया. फ्यूल सप्लाई इज गोइंग टू बी रेगुलर अगर हमारे शिप्स रेगुलर निकल के आते हैं. एंड गवर्नमेंट ने जैसा बोला भी है कि 60 डेज का ऑयल जो है वो हमारे पास है एंड 30 डेज का सीएनजी जो है, सॉरी एलपीजी जो है वो हमारे पास है. So I don't think it's going to create a like huge problem. And I think the way things are happening, कल एक द वायर के एडिटोरियल में मैंने पढ़ा शाम को कि द वे थिंग्स आर हैपनिंग, ईरान के ऊपर जो पर्टिकुलर फ्रेंडली नेशंस है, अब चूंकि द रशिया रशियन चाइनीज इंडियन पाकिस्तान दे ऑल आर गेटिंग अफेक्टेड. So the friendly nation might put a friendly pressure on Iran to discuss the terms. And the terms Americans are saying that is not reality. they उसके basis पे नहीं हो सकता. The terms Iranian are saying उसमें कुछ terms छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें जो है वो kind of logically accepted हो सकती है ना. So there are chances कि coming weeks में वो peace treaty हो जाए. इसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है दैट इज, मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो है ये पर्टिकुलर कंट्री, है ना. I'll tell you why. तुहिन का कहना है, but don't you think कि India can take this war as an advantage like America did the war one and two to become see wars का एडवांटेज लेना, आई डोंट थिंक इंडिया की कभी डिप्लोमेटिक या फॉरेन पॉलिसी रही है. बट हाँ, मोदी जी कैन कुड हैव टेकन एडवांटेज एंड पीस टॉक्स वगैरह को इनिशिएट करके नोबेल प्राइज जरूर ले सकते थे. बट फॉर नाउ मोदी जी इज अंडर दी माय फ्रेंड इंडियाज फ्रेंड काइंड ऑफ थिंग, तो वो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो गया है. ईरान के साथ जो हमने किया है वो थोड़ा सा गड़बड़ था. खैर, टॉकिंग अबाउट इसराइल, आई वाज लुकिंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ इसराइल. अभी कल का एक वीडियो बताता हूँ. यूएन में द इजरायली डिप्लोमेट वाज देयर एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट it is like Iranian attack. He said, I have three kids, and if there is a warning of 15 minutes or 1 minute to get them inside the bunker, right? Which one should I choose? There were people who strictly asked the question, "Ki, did you thought about 165 children, the girl child you killed in Minab? Right? Did you talk about did you ever thought about those 17,000 children in Gaza?" So now people have started understanding कि Israel is something कि जो हमेशा से मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब रखना चाहता है. So इस पर्टिकुलर पीस ट्रीटी में, पीस टॉक में जो सबसे बड़ा हर्डल है, आई बिलीव एंड एक्सपर्ट्स बिलीव कि भैया वो इजराइल ही होगा. Reason is quite simple that Israel don't want peace, right? People who are actually supporting Israel, they are fools. उनको ये नहीं पता कि ये चाचा ट्रम्प और इसराइल ने मिलके एक ऐसा chaotic chain reaction शुरू किया है because of which the entire world is facing crisis, right? हाँ. मैं think about it. Think about the scenario. Modi ji got the Nobel Peace Prize, and then Donald Trump is like कि what is this Modi ji? मतलब you should give it to me. So जो वो वेनेजुएला वाली के साथ हुआ, मोदी जी भी जाके दे दे उसको. So क्या ठीक है. भाई ये वॉर कितना यूनिक है. Americans are asking help to Chinese and Ukrainians. Pakistan, a terrorist attack, is initiating the peace. India, a diplomatically non-aligned nation, is talking to no one, right? America, the supreme power, is asking help from Ukraine. China, अब मतलब क्या ही कहे. And the strange how is, sir, nobody can understand the pain of genocide more than Israel. That's the problem. Like for last 70 years, हमें यही लगता था कि Israel जो है वो kind of self defense and other things में है because they have faced that genocide during the Hitler time. But मुझे ऐसा लगता है कि the things Israelis are doing in Gaza, Palestinian, West Bank, Lebanon, भाई ये लोग ना उसको भी सरपास कर देंगे.
हिटलर ने तो फिर भी लाइक जो गैस चैम्बर्स जो कंसंट्रेशन कैंप थे, he put them hidden from the world. इसराइल तो ओपन में कर रहा है, nobody is talking about it. 2.5 years गाजा में वो जेनोसाइड चला है. The Western media was silent, the people were silent, and there is a video recently. It was a very alarming, very disturbing video where men was what we can say interrogated, है ना? Like Palestinian men was interrogated, and to get the information from that men, उसके 1 साल के बच्चे पे, like 1 year old child के पैरों में सिगरेट बुझाई गई है. They actually put the marking of cigarette on the foots of that 1 year old kid. So I don't think that torturing kid will give you any kind of uh, 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 benefit in the world or in the heaven or anything. You did face something back in 1940s, 1950s. Now you are doing same to other person. So how you are different? आई हैव सीन दैट वीडियो. मैंने ट्विटर में देखा था भाई, मुझे बहुत दुख हुआ. मतलब देयर वाज ही वाज जस्ट अ 1 year old किड और उसके पैरों में आप सिगरेट बुझा रहे थे. इजरायली सोल्जर्स वर डूइंग इट. सो आई फेल्ट बैड. So Israel is only like the only particular problem which I can see in that particular peace talk. The rest of the world, they are, I think, they are fair enough. Like they are ready to get that particular peace. Right. So this was the current affairs and the news we got. मैंने तुम्हें बताया कि आज इंटरनेशनल एडिशन नहीं आया था. There was a Mumbai edition, but मैंने बोला बहुत आया था तो हमने डिस्कस नहीं किया. खैर, this was the news from my side for today. I'll see you in the next session जिसमें हमारे पास द हिंदू होगा तो हम इस न्यूज़पेपर को भी प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. So this is it from my side for today, and I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. मजे करो, लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. See ya, guys. Good day.